খুব Baji, it's called sambar.
and it originally originate from Maharashtrian dish, or we can say Marathi dish, and we can call it a fusion, or we can call it authentic sambar now. So कब फ्यूजन को prominent stage मिल जाती है ये भी हमें पता नहीं चलता. Sahi, go down. Sir, you were saying, adding something. So what I was saying was that if you look at ingredients also primarily, one thing that I'll certainly agree with Chef Sood is that, more than fusion, it is usually confusion. From my perspective, I mean, I run Fab Cafes, for example. When it has to, if you look at what we do, is use alternate ingredients, right? So I feel that from a fusion perspective, yes, because the way we live our life now and the kind of lifestyle that we are leading, it is important for us chefs to kind of keep that in mind. And आप पहले जो 1 मिनट के लिए जो अवधी खाना बनाते थे या जो कश्मीरी खाना बनाते थे, it's very rich of fat, for example. But it's our responsibility to bring that down and to create that food with alternate ingredients. हम लोग मैदे की जगह, फॉर एग्जांपल फैब कैफे में हम लोग उससे आपके कटहल का आटा यूज कर रहे हैं. जी. So that is where I feel that from a fusion perspective, rather than confusion, it should be using better, making food better for current situation. So इसका मतलब फ्यूजन में आप कौन ऐड कर दो कंफ्यूजन होती है, तो हमें प्रो ऐड करना चाहिए, प्रोफेशनल सर्व से ऐड करनी है, so it becomes a profusion. I would just like to add, जी. According to me, fusion cuisine, or it's linked to the so-called creativity and innovation of the present day. सर सबको ऑडिबल है, आवाज आ रही है आपको पीछे तक? बिल्कुल सही सर. I personally feel like when you say fusion food, it adds a sort of an element of fun and excitement. See, what I feel is, well, we chefs also, I'm part of it. हम जब create करते हैं, और जैसे Chef Sunil ने भी कहा, I would rather say, these sort of food, the fusion food or the latest innovations are good for bars, pubs, where youngsters are there. सर एक काम करते हैं, अच्छा है या बुरा उसमें बाद में आते हैं. सही है ना? अच्छा है बुरा बाद में आते हैं. पहले तो समझना चाहते हैं कि फ्यूजन होता क्या है. And let me just, zoom out completely and not zoom into culture. इंटरनेशनल की बात करते हैं, इंडिया की तो बाद में बात करते हैं. इंटरनेशनल भी अगर देखा जाए आज की डेट में, आप टेक्स मैक्स फूड कहते हो, पैन एशियन में एवरीथिंग, सबका इन्फ्लुएंस है, मतलब उसको पैन एशियन कहते हैं, जिसमें इंडिया को छोड़ के बाकी सब कुछ कंबाइन लोग करते हैं. सो दैट इज व्हाट इज दैट, बिकॉज अगर हम टेक्स मैक्स की बात करते हैं, हम कहीं पर भी जाते हैं, अपना आजकल बर्गर के अंदर भी यू विल फाइंड अपना, जैसे हम पिज्जा की बात करते हैं, पिज्जा लोग अपना 100 तरीके के बन रहे हैं. इटालियन को आप बोलोगे कि भैया पाइनएप्पल डाल दो अपने पिज्जा में, तो सारे के सारे पागल हो जाएंगे. सो माय क्वेश्चन इज सिंपल कि हम जो इंटरनेशनल बात करते हैं, इज इट गुड? मतलब हम वी हैव सीन सम रियली ग्रेट थिंग्स हैपनिंग, बट वहां से भी फ्यूजन हो रहा है ना. बस मैं वही तो कह रहा हूँ कि this sort of fusion, it adds to sort of fun excitement. तो जो like अगर वहाँ पे अगर आप देखो तो yes, it is bringing something different. आज जैसे वो सॉस का बोलते हैं ना, what is so different? This is a difference. Okay, so वहाँ तक तो ठीक है. But then when you talk in terms of classical food, again my cup of tea, I would say, my thinking कि वहाँ पे fusion इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए. When you talk in terms of classical food, when you got theme restaurant, define classical food. Let's say मटन मुगलाई, let's say, ठीक है ना, चिकन टिक्का मसाला, which is again a very traditional thing. अगर आप इसमें और कोई एलिमेंट्स डाल के, आप इसमें हॉट एंड गार्लिक सॉस डाल के उसको स्पाइसी मक्खन वाला कह दो, to certain extent, I believe, but then like again, like I would say we are stretching the so-called innovation too far. So let me put it little simply, what chef is also saying, fusion food में from a hospitality perspective से अगर आप देखते हैं, तो it is experiential, it is increasing your experiential dining, right? That is one aspect of it. The other aspect of it is that, rather than you preparing a tandoori chicken, you'd say that, it is bhatti ka murg. And because you can't cook that tandoori chicken the way it is supposed to be authentically, you kind of, give it a connotation also, or you call it a lemongrass chicken as well. For example, I mean, infuse lemon leaves into it, call it a lemongrass tandoori chicken, right? Or you give so at the end of the day, you can give a chettinad pizza as well, right? Instead of I would love that. Yeah, I'm a chettinad lover. So you could possibly do that. That is nothing right or wrong, but I feel that
fusion at a base level is marrying flavors together, which complement each other at a not at a restaurant, at a professional correct me level, if I'm but at a wrong. base What level. you're saying is कि अगर आपने तंदूरी चिकन के ऊपर सब कुछ करना है तो पहले एक अच्छा तंदूरी चिकन बनाना सीखो. Absolutely. जब एक बार आपको तंदूरी चिकन अच्छा बना लोगे तो उसके आप छेड़छाड़ कर लोगे तो एटलीस्ट यू नो व्हाट यू आर डूइंग, यू नो द व्हाट द ऑथेंटिक फ्लेवर इज, एंड इवेंचुअली द फ्यूजन शुड बी 30% तड़का बट 70% शुड बी द बेस की दाल उबाल के बढ़िया बननी चाहिए. Absolutely. Right, So sir? आप will you like to try a green curry risotto? I don't mind actually. You know, you are putting thoughts on your face और मैं सोच रहा हूँ कि हाँ हो भी सकता है. no, it will be nice actually when you giving a thought. It sounds nice actually. But So- अगर हम अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रेच नहीं करेंगे ना जी. तो हम बहुत लिमिटेड होके रह जाएंगे. तो मैं फ्यूजन तो एक मिनट के लिए बदनाम शब्द हो गया है. तो एक्सपेरिमेंटल कुकिंग इज नॉट बैड. हमने बचपन से हमारी मदर जब हम खाना नहीं खाते तो चीनी वाला परांठा बनाते थे. सो आई कुड कॉल इट अ फ्यूजन फॉर एग्जाम्पल. इट्स अ फ्यूजन फॉर हर कि आपको रेगुलर परांठा पसंद नहीं आ रहा, ले चीनी वाला परांठा खा ले. तो इट्स अ फर्स्ट फ्यूजन वी ऑल लर्न बचपन से. सो अगर वो एक्सपेरिमेंट या अपने आप को एक एक्सटेंड मेन्यू में नहीं जाती तो वो लिमिटेड रह जाता. I think what you've just said is very important because होता क्या है कई बारी हम लोग अपने शहर में हमारी अपब्रिंगिंग, हमारी कल्चर, हमारे रिलीजन एंड रीजन को करके देखे तो हमें लगता है कि ओह ये ऐसे होना चाहिए, बट एज सून एज यू गो से 400 किलोमीटर 600 किलोमीटर इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, ओह ऐसा भी होता है, ऐसा तो हम नहीं करते हैं, बट इवेंचुअली दैट इज वेरी स्टेपल फॉर देम. नाउ यू कैन कॉल इट फ्यूजन और कंफ्यूजन, बट एक्चुअली इट इज अ स्टेपल डाइट फॉर देम. But then it's adaptability as well, right? जी. Yeah. So that's it. सही. हाँ. बटर चिकन हम सबको पसंद है. बटर चिकन इज अ फ्यूजन. अगर कुंदलाल जग्गी उस रात को कुछ सोचते नहीं कि तंदूरी चिकन भी मैं ग्रेवी में डाल सकता हूँ तो वो फ्यूजन नहीं बनता. सही. और आज टिक्कू जी क्या खाते फिर? सही. तो फ्यूजन मैं को भी एक नहीं खा तो फ्यूजन को एक पॉइंट मिल गया. सो यू सर आप कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं कह रहा हूँ कि लाइक व्हेन यू से लाइक इनोवेशन, लाइक जी. जो ये कह रहे हैं ना कि बटर अपना यहाँ से तंदूरी चिकन से बटर चिकन बन गया. यस, इट वाज ए इनोवेशन, जी. बट देन इट इज ऑन द पाथ ऑफ ओरिजिनलिटी, आई वुड पुट इट एज. अगर आप यही उसको मिक्स मैच कर लो किसी के साथ, यू नो लाइक तंदूरी चिकन विद समथिंग चाइनीज सॉस, सर एक काम करते हैं. then हाँ. again that according to me is confusion, not innovation. सही. तो मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया. आई थिंक वी कम बैक टू व्हाट अपना सुनील जी सेड कि भैया अगर आपको अपना से तंदूरी चिकन को ऊपर मेहनत करनी है, कुछ करना है, तो यू शुड नो कि तंदूरी चिकन बनता कैसे है. उसके बाद अलग कहानी है, देन आप भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं करोगे. बट यू ऑल थ्री ऑफ यू आई वाज टॉकिंग टू यू हैव बीन ट्रैवल्ड वेल अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, डिफरेंट कंट्रीज. इंडिया पे तो बाद में आएंगे, बट मतलब इंडिया में बाद में आएंगे बिकॉज बहुत कुछ है वहां बात करने के लिए. बट व्हाट इज दैट वन से इनोवेटिव डिश जो आपको लगा भाई ये तो मतलब पॉसिबल नहीं था और यहाँ पे मैं बाहर खा के आया हूँ? Any one of you like whoever is comfortable. उज्बेकिस्तान मेरा रीसेंट ट्रिप था. मैं न्यू ईयर पे उज्बेकिस्तान गया हुआ था. आई न्यू इट बट पहली बार मैंने इट वाज द सेकंड ट्रिप ऑफ माइन दो, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट समोसा भारत में उज्बेकिस्तान से आया है. जी. और वहां पर तंदूर में लगाया जाता है समोसा और हम यहाँ पर तल के खाते हैं. बट उसकी उत्पत्ति यहाँ पर तो हम खैर आलू वाला खाते हैं, तो वी कैन नॉट इवन कॉल इट ऑथेंटिक बिकॉज आलू भी अभी 150 साल पहले ही आया है. तो मतलब बहुत सारी चीजें जब हम ऑथेंटिक शब्द इस्तेमाल कर, मुझे लगता है एज अ शेफ देयर इज नथिंग ऑथेंटिक. तो हमें अपने purist होना is like not really, but no, very interesting thing. How many of you have been to like say Thailand? ठीक है. So the first time I went there and I said चावल के साथ आम कौन खाता है? अरे आई लव इट भाई, नाश्ते में. And I did not have it. Second time I went, I said I will try it. Third time I went, I specially went for it. मतलब actually, no, they have this, for those who are not aware, they have this wonderful dessert called coconut. So it is called, you know, mango and sticky rice. So it's mango, sticky rice, coconut milk. और उसके ऊपर बनती है दाल की भुजिया, you know, एक तरीके से. And what textures, what flavors. कोई यहाँ पर है, मेरा मन कर रहा खाने का अभी. यहाँ पर है, मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर है, मुझे पानी आ गया. So again, you know, again वही वाली बात है कि for us, you know, चावल और मैंगो साथ में कौन खाएगा, but actually देखा जाए तो हमारी दादियां शाम को खाती थी आम के मुरब्बे के साथ रोटियां. मतलब सब. टिक्कू जी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, एंड यू नो दिस हैज टू डू विद व्हाट आई, यू नो व्हाट व्हेन आई
when I take a step towards that direction, जी आप में से किसी ने भी मसाला चाय आइसक्रीम खाई है? नहीं, So अभी I तक did मैंने नहीं। in Fab Cafe, I did a masala chai ice cream basically, because you know the thing is that, and it's damn tasty. So iced tea, अगर iced coffee हो सकती है, तो मसाला चाय आइसक्रीम भी हो सकती है, right? From that perspective, I feel that you are in a right direction when it comes to being innovative, when it comes to whether you want to call it a fusion food or not. अब आप आइसक्रीम को आप क्रंच देते हो, बटर स्कॉच क्रंच या नट क्रंच देते हो। मैंने उसमें उस आइसक्रीम में मैंने पाम जैगरी की चिक्की डाली, गुड़ की चिक्की, बिकॉज दैट्स योर क्रंच एलिमेंट, राइट? सो आई मीन या तो बट सही, इसका इंडिया मतलब ये है कि अगर हमने फ्यूजन कभी किया ही नहीं तो आज भी हम सिर्फ फ्रूट्स ही खा रहे होते, क्योंकि इनोवेशन किया तभी हम आगे बढ़ते गए और कुछ ना कुछ नया बनता गया। सो आई थिंक ओनली in this world, there is nothing more permanent than change. And when we talk about food, it is the most important thing, because हम में से कुछ लोग उसको दिन में 3 बार ही खाते हैं, मेरे जैसे कुछ लोग 5 बार ही खाते हैं। So कहीं ना कहीं one needs to keep changing and keep fusing different things. Sir, please, all yours. I know. I just want to add one thing. जैसे आपने कहा ना कि innovative things. Now, when we talk in terms of pizza is basically a savory item with a tomato base or a sauce and some toppings, vegetable, chicken हो गया, egg हो गया, cold cuts हो गए. I was in charge of village this Commonwealth Games in 2010. Okay? So we had created the sweet pizzas over there. Again, it might have been there, but then we had chefs from Australia and other places. They assisted us and they made sweet pizzas. That is, instead of the tomato sauce, we had a custard base, we had the sabaya sauce, we had fruits on top of, we had dry fruits, we had nuts, etc. And we created about 5 or 6 varieties of sweet pizzas. And how was it accepted? It was very well accepted, because again, coincidence, we used to do almost about 900 pizzas in one session every day. And we had almost about 37,000 meals being served in the whole day. सही तो उसमें होता था कि 17,000 जो डेलीगेट्स थे, उनमें से अगर 2,000 भी आगे खा लेते, that was a great achievement. सही। तो जैसे हमने पहले अपना मीठा पान सुना था, लेकिन किसी ने चॉकलेट पान नहीं सुना था till 10 years back। अब तो चॉकलेट पान भी आता है। वैसे आप में से किसी ने खाया है चॉकलेट पान? I've never had it. हाँ जी, खाया है मैंने सीपी पे। कैसा लगा सर आपको? ठीक है, it's a good variety. Let's take it. अब पान is a पान. Okay, पान के अंदर गुलकंद होता है, मसाले होते हैं, etc., which is well accepted. But when you say chocolate pan, it's good for a change. अगर मुझे कहोगे कि हफ्ते में 6 दिन खाओ, मैं कहूँगा नहीं है कि ओरिजिनल पानी खाऊंगा, लेकिन for a change, yes, I'll accept it. सही। I think so. At the end of the day, all is about experimenting different things. One should experiment. स्वाद आपको शायद अच्छा लगे, किसी और को अच्छा लगे, and क्या पता कुछ ऐसे लोग भी हो जो हफ्ते में 6 दिन वही खाना चाहे. Probably you'll see tomorrow's kids just having a chocolate pan because they realize कि यही मिलता है, बाकी जो बाकी नॉर्मल वाला पान है वो अपना फ्यूजन है, ये एक्चुअली पान है। Familiarity वाला वो आ जाता है, definitely आ जाता है, there is no doubt about it. And I think innovation वगैरह of course होती रहनी चाहिए. It is आप खाना जो है शरीर का भोग है, right? And you have to have variety. You do look for a variety. So thankfully, we got some really great points. You mentioned about masala chai, apna ice cream. You mentioned about the sweet pizzas, and you mentioned about samosa and aloo ki jo sari kahani hai. Sounds very interesting. अब थोड़ा सा पास आ जाते हैं और अपने इंडिया में आ जाते हैं. या मैं काम करता हूँ, एक स्टेप और पीछे लेता हूँ, because today most of the Chinese places would also have a gobi Manchurian. अब कहने को गोभी अपना obviously चाइना में भी मिलता है, but गोभी मंचूरियन जो है आज के डेट में इंटीग्रल डिश होगी जिसमें वो इंडियन तड़का है. What do you have to say about that dish or some unique dish that you tried recently कि भाई खाई और ऐसा लगा कि भाई ये तो हमारी है, किसी और की नहीं है? जैसे हमें समोसा लगता है हमारा ही है, और फॉर नहीं यार, मतलब समोसा जो मैंने खाया, मतलब मैं फेलो पेस्ट्री वाला था, पफ्ड था, पट्टी नहीं था, पेस्ट्री, मतलब लिटरली इट वाज लाइक अ पफ जी, बट दे कॉल इट समोसा, तो दैट वाज अ डिफरेंट ऑफ कोर्स जी. और शायद मुझे अपना समोसा ज्यादा अच्छा लगा सही. अगर मैं कंपेयर करूंगा कि हमारा आलू वाला समोसा ज्यादा अच्छा है. बट ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज गुड टू चेज बैक एंड लर्न कि उन्होंने कहाँ से इनोवेट करा. तो जो आपने पहले पॉइंट बोला था, मैं उसको 100% एग्री करता हूँ, और शेफ से मैं स्वीटली डिसएग्री करता हूँ कि मुझे लगता है कि हमेशा एज ए शेफ वी शुड नॉट कीप अ सेल्फ इन अ बाउंड्री. अपने आप को लकीर का फकीर नहीं बनाना चाहिए.
with respect to the original dish we know. Of course, I agree. We should know the original dish, but at the same time, we should not, limit ourselves. अगर आपको A बनाना आता है तो A plus A minus A X आपको बनाना सीखना चाहिए, तभी इनोवेशन होगी, मेन्यू एक्सपैंड तभी होगा, बट A आपको आना चाहिए. So, that brings to me to, say that, it is said that imagination is more important than knowledge. But if you're talking about creating fusion, then knowledge ज़्यादा जरूरी है imagination से. Because अगर आप imagination से खेलोगे तो कुछ edible ही नहीं बन पाएगा. बस अभी देखिए मार्केट में आज की like we all know what is mayonnaise sauce, okay? But आज की तारीख में mayonnaise sauce, ठीक है ना? But आज क्या हो गया है कि considering that a lot of people are now talking in terms of vegetarianism, उनको शाकाहारी पसंद है. अच्छा, egg mayonnaise जो है उससे differ करना है. Now you see the market is flooded with veg mayonnaise. Okay. Now this may be a good innovation or a creation, I would put it. But the mayonnaise is a mayonnaise. Okay. Same goes with the cake. What is a cake? Cake is leavening from the eggs. लेकिन आजकल आप देख लो कि सारे बोल रहे हैं कि synthesizer यूज कर रहे हैं, emulsifiers यूज कर रहे हैं. They are using curd. They are using so many other things. The cake and new creations have come up. Accepted, new products have come, but cake is a cake. See, I always believe a vintage wine is a vintage wine. You may create other wines, but that cannot be replace a vintage wine. सही sir, बिल्कुल सही बात आपकी. Point well taken. So, I would like to add something here in terms of आपका आप बोल रहे थे ना कि भाई what is it that you've seen and you've said कि यार हाँ ये तो देसी है. मैंने खाया नहीं है, but recently I saw somewhere in Instagram कुल्हड़ pizza. Yeah, that's a very famous couple as well. So I think वो कहाँ है, शायद गुजरात में होगा, पंजाब में. So yeah, so that's. मैंने cornetto pizza खाया है and I loved it. Basically उसमें pizza puff को cornetto के cornetto नहीं, कुल्हड़ के अंदर pizza. कुल्हड़ वाला agree, पंजाब में है. But as a fusion, I loved the cornetto pizza because of the way it was been done. Yes. And I'm just forgetting where I have eaten. And very crunchy वो roll के अंदर ही होता है, ऐसे खाते थे अपना. So it is roll में होता है and you would bite and like very soft. और वो probably I think मैंने आपके भी reel में देखा था, वो bread बनती है ना roll करके लक्कड़ के पास and they create it. अरे वाह सही, perfect है. So अपना some again जब हम बात कर रहे हैं about fusion की, I would also like to add one of my best jalebis I had was recently in Lucknow, and it was not just a jalebi, it was jalebi with dahi, which I would have not thought of, but I had it, and it is a staple. भाई उसके नहीं खाएंगे तो मतलब भाई उस दिन दिन नहीं शुरू होगा. बनारस के अंदर अपना मैं एक जा रहा था, कहीं पे भूख लगी थी और वहां पे देखा बहुत रश था, मैं चला गया, पता लगा समोसे की दुकान थी, लिया, साथ में वो ना डाल रहा गुलाब जामुन और कुछ सफेद रंग का. मैं कहा दाल रबड़ी रहा है कुछ, बट इट इज वेरी स्मूथ. पता लगा वो रबड़ी नहीं दही है. And again, gulab jamun with dahi is something which is very staple for them. So I think across ये मैं तो नॉर्थ की बात ही कर रहा हूँ. अगर हम but flavor असम में रसगुल्ला और दही खाते हैं. हाँ, तो अगर आप वेस्ट चले जाओ, I mean you get so many flavored yogurts. That's the reason आपका sweet का और so वही I think for someone when it for some it could be a fusion, some it could be a staple diet, for some it may be a confusion. But हाँ जी सर, बस एक और चीज अभी हमारे लिए सबसे पॉपुलर है गोलगप्पे, पानी पूरी, पुचका, like known with different names in different regions. But अभी उसके अंदर भी innovation है, like I say, okay, if you're using the cup as a shell or like a container, ठीक है, उसके अंदर आप prawn bits डाल के सर्व कर रहे हो. Now you name it something different. I appreciate that you're using the casing, but then don't call it as a prawn puchka or a prawn golgappa. Don't defame our pani puri and the golgappas. I would put it that. I think what I would like to really add or is कि इसमें जो भी fusion है, confusion है, उसमें 50% जो योगदान है वो chefs का है, 50% audience का है which is demanding it. Because today's crowd, चाहे वो नहीं, ये खुजली हमारी है जी, ये हमारी भी फैलाई बीमारी है और हम ही इसको क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि शेफ रोक के बोलो, ऐसे मत बोलो. ये बीमारी भी हमारी, आपने ही मीठा पिज्जा बनाया था, आपने बनाया. ये बीमारी हमारी फैलाई हुई है, इसको बीमारी मत बोलो पहली बात तो ये जो लोगों को डिमांड कोई कौन करता है, कौन आगे कहेगा मुझे ये चीज खानी है, ये खुद की उपज होती है. तो ये अपनी क्रिएटिविटी शांत हम ऐसे करते हैं और बिक भी जाता है ऑफ कोर्स. और ऐसा नहीं है, देखिए जनरली कोई भी फ्यूजन करता है
मैं हर फ्यूजन को रिस्पेक्टफुली मैं कहूंगा, दिमाग तो लगाता है थोड़ा थोड़ा। अब ऑडियंस एक्सेप्ट करती है नहीं करती है, दैट इज अ मार्केट, बट डेफिनेटली हुएवर डू एनी काइंड ऑफ फ्यूजन, चाहे शेफ ने बोला कि अपना प्रॉन्स पुचका, आई वुड से आई लव इट, इन एक्चुअली द वे ही सेड आई लव इट, आई साउंड्स गुड टू मी, क्योंकि खाने में बेसिकली 3 प्रिंसिपल होते हैं। एक, खाना आसान होना चाहिए, खाने में स्वाद होना चाहिए, और खाना खाने के बाद में प्यास नहीं लगनी चाहिए। दैट इज वन ऑफ द मेजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। खाना खाने के बाद में आपको इमीडिएटली प्यास नहीं लगनी चाहिए, ये थंब रूल है खाने का। आप कोई भी खाना खा रहे हो, बना रहे हो, आपके मुंह में उतना सलाइवा प्रोड्यूस होना चाहिए जी। सो अगर ये बेस फॉलो करता है तो मैं कोई भी फूड एक्सेप्ट करता हूँ। नॉट चॉकलेट मोमोज, बाय द वे आई एम वेरी अगेंस्ट चॉकलेट मोमोज, मैं सख्ती से प्रोटेस्ट करता हूँ चॉकलेट मोमोज। चलो, आपने मोमोज की बात की, आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन। व्हेन वी स्टार्टेड हैविंग मोमोज, हम मोमोज को सो कॉल्ड लाल चटनियां खाते थे, और आज मेयो के साथ ज्यादा बिकता है। जहर है, तो जहर, प्योर जहर है। नहीं, जहर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू मेरे से? दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जहर है। आई रिस्पेक्ट ऑल द कल्चर्स। उनके पास में चटनी नहीं थी वहां पर जहां पर ये मेयोनीज उत्पत्ति हुई, हमारे पास चटनी थी। हमने चटनी को छोड़ के मेयो पे जा रहे हैं, विच इज अ प्योर प्योर फैट। जो टेक्निक, अगर आप ओरिजिनल ऑथेंटिक मोमो, सॉरी, मेयो भी बनाओगे तो भी मैं रिस्पेक्ट दूंगा, जो कि नहीं 99.9% कोई भी नहीं बनाता। तो आई एम वेरी अगेंस्ट मोमो मेयोनीज, क्योंकि मेयोनीज के नाम पे जहर खा रहे हैं हम। बट अगर उसको रिप्लेस करा जाए किसी भी तरीके की चटनी से विच इज फ्रेशली डन, आई रिस्पेक्ट एंड लव इट। आई थिंक वी हैव कम टू अ टॉपिक व्हिच इज अबाउट मोमोज, और मोमोज हम सबके काफी करीब है। तो सर, लेट अस स्टिक फॉर 2 more minutes ऑन मोमोज। आज की डेट में इफ यू गो टू अ मोमो शॉप, पहले मिलते थे 2 ऑप्शन होती थी, 2 वेजिटेरियन 2 नॉन वेजिटेरियन, एक स्टीम्ड एक अपना फ्राइड, उसके अलावा तीसरा नहीं होता था। मतलब मैं अपनी एज की बात कर रहा हूँ। अभी तो वेरिएशन की लिमिट नहीं है। हाँ जी सर। तंदूरी मोमोज, दिस मोमो, सर, अफगानी मोमो, अपना करी मोमो, चेटीनाड मोमो, ये तो हो गया कि जो मोमो सामने पड़ा है, आप उसको किसी के साथ भी बटर चिकन मोमोज, यस, यू नो, लाइक No, but it's a very interesting thing, and I would like to throw numbers here as please well. sir, please. I was speaking to Chef Raj of Wow Momos के, वो हाँ, so he's the corporate chef of Wow Momos. So मैं उनको पूछ रहा था, मैंने कहा ये सारे के सारे मोमोज हो रहे हैं और आप भी उस डायरेक्शन में जा रहे हो, but you went to the extent of frying a momo, putting it in a burger, and then calling it a mo burger as well. तो कितना बिकता है, कितना होता है? तो ये लाइक कि देखो, ऐसा है कि ये वैरायटी जो है वो होती है 10% के लिए होती है, एक बार के लिए होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बिकता है वो बेसिक बिकता है, सबसे ज्यादा वो बेसिक ही बिकता है। So that is the fact. तो कहते हैं कि एक टिक मारने के लिए 4 कांटे ही मारने चाहिए। सो 4 कांटे के लिए यू पुट सम थिंग्स की बंदा कहीं यार यही दे दो, बट उसको ऑप्शन चाहिए आज की डेट में जनता को, बिकॉज वी ऑल हैव बीन स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस। थैंक यू जिसने भी आवाज को बंद किया, या ऊपर से आ रही थी, मैं तो पहले लगा ऊपर से एरोप्लेन निकल रहा है, तो वो 10 सेकंड में कम हो जाएगा, उसके बाद वो चलता ही है। बट मोमोज का आपने इकोनॉमिक्स देखा आज की डेट में? मोमोज आज की डेट में एटलीस्ट दिल्ली और नॉर्थ, बाकी भी फैलता जा रहा है ऐसे तो, बट मोमोज का इकोनॉमिक्स ये है कि आपका 50 रुपए में 10 मोमोज आते हैं, पेट भर जाता है। तो इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल स्ट्रीट फूड। हाउ मच टाइम डू वी हैव? तो मतलब देखा जाए तो, और आज की डेट में ऑटोमेशन मशीन्स और मोमोज की जिस तरीके से आती जा रही है, और आपको हर 10 कदम पर पानी मिले ना मिले मोमोज वाला मिल जाएगा, जैसा हो गया आज की डेट में। and they prefer to have somebody looking from Chinese या नेपाली फेस का आदमी रखना प्रेफर करते हैं। तिब्बतन, they call it तिब्बती कोई मोमो नहीं बेचता, they're rich enough people. Okay, sir, my question is for you specifically because you have been selling food. You Yes, have been yes. serving, he has been exploring, you have been selling food. Which is one fusion dish, purely fusion dish, जो अपना हमें भी पता लगे, जैसे you mentioned about jackfruit flour, वो शायद कॉमन पर्सन मुझे नहीं बताएगा, but something which is visibly fusion, ऐसी कौन सी highest selling dish है which is on your menu? So मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि हमारे यहाँ बिकने के लिए एट द एंड ऑफ द डे जो बिकने में वो समोसा ही सबसे ज्यादा बिक रहा है। फॉर कौन सा सर? सॉरी, तो मैंने कहा हमारे मेन्यू में जो सबसे ज्यादा जो बिक रहा है, फॉर एग्जाम्पल, you'll be surprised that samosa is a very very common thing, samosa, right? ठीक है।
But then the thing is कि वो समोसे का, it was my responsibility as a chef, as somebody who's kind of whose responsibility is also feeding good food to the people, because you were eating out so much. मैंने उसमें जो है उसमें से आलू हटा के मैंने उसमें जिमीकंद डाला, मैंने उसमें गाजर डाला, मैंने उसमें स्वीट पोटैटो डाला, उस चीज का इंटरप्रिटेशन दिया, एंड देन फ्राइड की जगह कंप्लीट फ्राइड नहीं किया है, पार्शल फ्राई करके फिर उसको बेक किया, सो दैट फैट ऑब्जॉर्प्शन बहुत कम हो। उसमें मैंने फ्लावर जो मैंने लिया, उसमें फ्लावर में मैंने अलसी के बीज को सही सर, थैंक यू वेरी मच। अपना हम फ्यूजन की जो कहानी है वो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, एंड उसके लिए लेट अस आस्क इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो प्लीज लेट अस नो, नहीं तो हम अपनी कार्यवाही आगे जारी रखेंगे। एनीबडी, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ आप बताना चाहते हैं, अपना कुछ एक्सपीरियंस क्रिस्प एंड शॉर्ट? या तो हमने हर चीज का ज्ञान दे दिया है, इसलिए आपको पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, शेफ खेमानी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, माइक, एक्सक्यूज मी। Thank you all for coming here, and lovely panel is sitting here, and with so many years of knowledge. Every food is good, is on the earth. Whatever we eat and edible is good for our body. Is how we consume it and how we use it as positive energy. That is most important. And yes, momos evolved from the very premium version of dim sums. सर क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन क्या है आपका, या आपका स्टेटमेंट क्या है? To eat healthy and be local, that is my सर फ्यूजन तो लोकल में भी होता है, फ्यूजन तो बाहर का भी होता है। fusion should be healthy. फ्यूजन शुड बी हेल्दी, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है, फ्यूजन शुड बी हेल्दी। हाँ जी, any other question here? मैं आपके डायलॉग को पूरा कर देता हूँ जी प्लीज। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमति ने कुनबा जोड़ा। जी, लेकिन आज इसको बदल के आप अगर करोगे कि कहीं का ढोकला और कहीं का सैंडविच, तो ये भी फ्यूजन ही है। आज स्टफ ढोकला सैंडविच है, काफी सारी चीजें चल रही हैं, आपने देखा ही है। इवनली एग्जाम्पल के लिए मल्टीनेशनल कंपनियां भी सर्वाइव फ्यूजन पे ही हैं। अगर वो इटली का पिज्जा आपके यहाँ खाया जा रहा है तो उन्होंने अगर अपना फ्यूजन यहाँ इंडिया में आके नहीं किया तो वो भी सक्सेस नहीं होते शायद, मेरी नजर में। क्योंकि आज उनके पिज्जा में बटर चिकन पिज्जा है, तंदूरी पिज्जा है, काफी सारे फ्यूजन उन्होंने किए हुए हैं। तो एक कहते हैं ना कि आपको समय के साथ, या जैसा देश वैसा भेष, कहावतें काफी सारी हैं और वो चलती रहती हैं, और उसके अकॉर्डिंग आपको भी आपने आपको मॉडिफिकेशन करना है। पॉइंट वेरी वेल एडेड, थैंक यू वेरी मच। जैसे लेट्स talk about the brands that have come to India. हम मैकडॉनल्ड्स की बात करें, one of the biggest selling burger sandwich they have been doing is chicken McGrill, जिसके अंदर एक्चुअली पुदीने की चटनी है, जो जिंदगी में उन्होंने कहीं पर भी नहीं की। रात उन्होंने कहीं पे वेज भी नहीं किया, यहीं पर वेज भी निकाला, मैक वेजी बर्गर्स वगैरह। सो आई थिंक अगेन विद टेकिंग योर पॉइंट फॉरवर्ड कि ऑल द say multinational companies or whoever is coming, आपको कहीं ना कहीं टेस्ट में तो करना ही पड़ेगा चेंज। आई थिंक ऐसा ही बाहर भी होता होगा। if say Indian someone is serving Indian food outside in European countries, तो वो भी उसके अंदर कुछ तड़का लोकल का लगाते होंगे। Boss, I just want to add now the latest thing what you said. I'm attached to a company called as Tech Taste. We do sensories and like tasting of various foods. Okay. यहाँ पे अभी एक अभी और स्टडी आई है जहाँ पे किकुमन soya sauce. Now, soya sauce, when we talk in terms of chef or as a common people, we always link it to the Chinese food. ठीक है ना? अभी Kikoman has come out with a new concept wherein they are pairing soya sauce with Indian ingredients. Okay, they have done a lot of studies, and coincidentally, our company has been attached to that. We have done some sort of market survey on tastings, sensories, etc. जहाँ पे कि हम Indian ingredients को सोया के साथ मैच कर रहे हैं, ठीक है? And let me tell you, in the next maybe about 4 or 5 months, you will see the market being flooded. कि भाई आज की तारीख पे कोई शेफ भी बता दे कि भाई हम सोया सॉस किसी भी इंडियन कुजीन में कहीं पे भी यूज करते नहीं करते। But now the time will come where soya sauce will be used as an added flavor to the Indian. I think some is added because of marketing part of it and exploring things. I also realized that sometime back US Cranberries launched cranberry dahi bhalla with Haldirams,
और उसमें कुछ चीजों में चाट में उन्होंने कोशिश की कि भैया अनार की जगह ऊपर क्रैनबेरीज डाली जाए. And what I got to know both from Haldiram's and US cranberries was they were both hit. Also, जो उन्होंने मिठाई बनाई थी 4-5 सिर्फ 15-20 दिन के प्रमोशन के लिए, उनमें से एक्चुअली 4 मिठाई इस टाइम रेगुलरली पिछले 2 साल से बिक रही हैं बिकॉज पीपल स्टार्टेड लविंग दोस क्रैनबेरी फज एंड क्रैनबेरी खोया मिठाई. सो अगेन कमिंग बैक टू द थिंग इज कि फ्यूजन एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए. कुछ चलेगा, कुछ नहीं चलेगा. जो चलेगा चलाओ, जो नहीं चलेगा उसको पीछे छोड़ो और फिर कुछ नया बनाओ. आई थिंक ऑन दिस नोट वी कैन, इफ नोबडी हैज अ क्वेश्चन, वी कैन कॉल अ डे. In case you have anything else to add in the last 1 minute, let's take a closing remark. Nothing. I just want to thank all of you for listening so patiently and your good audience. Thank you very much. Sahi. And I just want to add, I gave my views. It's not that I'm against the sort of innovation and the fusion, but yes, it's my way of thinking that originality, the authentic dishes should be positioned as they are. And at the simultaneously at the same time, you can keep on creating your own creations and innovations also. It's the need of the day. I fully agree and I justify. But I would say, जो original dish है उनको वैसे ही maintain करो. उसके आप parallel आप dishes बनाओ, but don't name it as original dish. I would just say, as I said, innovation leads to a lot of fun element, excitement. अगर आपको नई dish मिल रही है, नवे flavors मिल रहे हैं, keep adding to it. Sahi, sir. Thank you very much. Let's maintain the original dishes in their own position. Perfect, sir. Thank you very much, sir. मैं +1 कर देता हूँ उनके साथ में, जो उन्होंने बोला वही +1. परफेक्ट जी. सो एक काम करते हैं, इस कंफ्यूजन को एंड करके कंक्लूजन भी मिल गया हमको. सो यहाँ पे हम करते हैं आपका थैंक यू. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ वंडरफुल ऑडियंस एंड थैंक्स अ लॉट फॉर क्लैपिंग. हमें लग रहा है कि हमने को अच्छा किया है. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. थैंक्स अ लॉट. इट वाज वंडरफुल. थैंक यू जी. थैंक यू जी. हाँ जी, ऑफ कोर्स. थैंक यू सर. सही. Thank you so much. And may I please request Soumyajit Sem Gupta, Associate Vice President, Sales and Partnership from BW Business World, to present a token to all our panelists and also to our moderator, please. Sir, शादी का सीजन है, लिफाफा लग भी रहे हैं. I think collectively, let's just give them a big round of applause for starting a day. Thank you so much for discussing everything from momos to fusions to everything. Thank you so much. Thank you so much, chef. Thank you. Yes, you did. All of it made sense. Okay. Now I told you कि दो चीजें simultaneously चलेंगी.
time. Till then, please enjoy the fest and make it more vibrant and more bigger. Thanks for all of you to make it so special. Thanks for your presence. Thanks. Hello, check. Hello. While the masterclass will start in a while here, while the panel discussion or rather would begin here in a while, हमारी जो उत्तराखंड cuisine पे master class है, that has started downstairs. You can just follow the stairs. Chef Sunil Chauhan, the founder and the owner of Fab Cafe, is taking that master class, and he's about to start. He'll teach you and take you to the journey of Uttarakhand cuisine while making it for you. So please join the team downstairs. There's another setup, beautiful setup like this downstairs as well. The panel discussion here will begin in the next few minutes. So then the masterclass is on for all of you to witness and learn and enjoy from. Thank you.